Well, what a stunning win for Pakistan, and it's come after quite some time. They lost that series against Bangladesh, they lost the series against Australia, lost the first test against England, but have been triumphant in this second test match in Multan, courtesy some wonderful spin bowling by Sajid Khan and Noman Ali, contributions from Kamran Ghulam at the top. He was the debutant making that 118 and really put Pakistan in a good position in that first innings. Pakistan winning this test match comfortably by 152 runs. But jubilation for Pakistan as now the series is at 1-1. England won that first test match by an innings and 47 runs. Pakistan winning this one comprehensively, and now the last and the final test match will be played in Rawalpindi on the 24th of October. Well, back on pitch side and all smiles in that Pakistan camp after quite some while, and well deserved as well. What a stunning performance by the Pakistani spinners, and generally everything went to plan right from the toss and making all those runs in that first innings. Kamran Ghulam's debut, and then the spinners really making the ball stalk. So we're talking about Pakistan and their celebrations. I think I've got a very, very special player, star player next to me who's been rather the orchestrator of all of this success that Pakistan has seen. Noman Ali is with me. Alongside him is Ramiz Raja. Noman, thank you so much. बहुत बहुत आपका शुक्रिया. पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जीत की. बहुत ज़रूरी थी, मेरा ख्याल है इस कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीते. बड़ी देर बाद टेस्ट मैच जीता. तो ऑब्वियसली पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जीत की कितनी खुशी. थैंक यू. पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान मैच जीता पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन थी, और आई थिंक इस जीत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. पिछले आप देखें जितने भी मैचेस हो गए उसके अंदर हमारी मतलब अच्छा एक स्टार्ट भी मिलता था, लेकिन हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे. जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पर हमने लास्ट डे के अंदर अपने आप को काम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारे हक़ में आई. अपनी बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें. 11 विकेटें आपने हासिल की, करियर बेस्ट आपके फिगर्स हैं. 8 विकेटें आपको भी हम दिखाएंगे भी जो आपकी थी. बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, फ्लाइट भी हमें नज़र आई, गायब एक टिपिकल जो हम देखते हैं इन दीज कंडीशंस. तो क्या आप महसूस कर रहे थे आते हुए कि मैंने क्या लाइन एंड लेंथ करानी है, क्या गेम प्लान था अगेंस्ट इंग्लैंड? देखें सिंपल बिल्कुल, क्योंकि आप कंडीशन हमारी फेवर में थी यहाँ पे और कुछ भी नहीं था. आपने सिंपल अपने प्लान पे रहना था. मेरे ख्याल से आपकी लाइन और लेंथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी था वेरिएशन, क्योंकि आप अगर इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो आपको ये ज़्यादातर एक लाइन पे बॉल करने नहीं देंगे. कोशिश ये की थी कि अपनी लाइन और लेंथ पे बॉल करें. ये अगर स्वीप भी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को वेरी करें, बॉल को वेरी करें, वो पेस उनको ना मिले जो वो चाह रहे हैं. भाई ये कोशिश की, वेरिएशन को यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें सक्सेस मिली. नुमान देखें बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखी आप में. माशाल्लाह से आप 38 साल के हो गए हैं. मैंने आपको बहुत बॉलिंग करते देखा है, मगर ये बहुत अरसे के बाद मज़ा आया आपकी बॉलिंग देख के. आपने भी इंजॉय किया वो, जैसे हम ऑफ द ईयर बात कर रहे थे कि शेन वॉर्न जब बॉलिंग करते थे तो देखने में मज़ा आता था, क्योंकि वो विकेट लेने का एक जो बिल्डअप होता था ना वो क्लासिकल था. आपका भी बिल्डअप बड़ा क्लासिकल था. इसमें कि स्पिन तो हो रही थी ये विकेट, मगर इसमें चीज़ें सिंपल रखना जो था ना वो चैलेंज होगा, आई एम श्योर. बिल्कुल. देखें रमीज़ भाई, माशाल्लाह ये तो मेरा करियर बेस्ट भी था, और पूरे मैच में 10 आउट, और पिछली जो मेरी लास्ट इनिंग जो मैंने लास्ट टेस्ट खेला था पिछले साल के जुलाई में, तकरीबन 14-15 महीने के बाद, उसमें आखिरी इनिंग में मेरे 7 आउट थे. तो कोशिश यही थी कि अपना बेस्ट दूं. और जो आपने सवाल किया रमीज़ भाई, उसके अंदर बस कामनेस ये था कि आप क्योंकि आपकी अगर कंडीशन अगर आपके फेवर में है, अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई काम नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, अपने पेस को यूज़ करेंगे और लाइन और लेंथ पे रहेंगे, और जो हमारे पिछले 2-3 दिन से जो डिस्कस चल रही थी, कोचेस से डिस्कस चल रही थी, कप्तान से डिस्कस चल रही थी, वो यही थी कि हम अपने पेस को वेरी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको शॉट्स मारेंगे, आपको अपनी जगह पे बॉल करने नहीं देंगे, आपको मुश्किल से एक ओवर भी ये सामने खेलेंगे. तो कोशिश यही की कि अपने वेरिएशन को यूज़ करें और सिंपल अपने आप को रखा और काम रखा.
एक कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे जो है ना हंट इन पेयर्स कहते हैं ना, फास्ट बॉलर्स हैं डेनिस लिली, जेफ टॉमसन, वकार, वसीम, आपने साजिद के साथ बॉलिंग की है, कैसा पाया, कितना प्रेशर ऑफ किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से? जब उन्होंने विकेटें ली तब शायद इतनी स्पिनिंग कंडीशंस नहीं थी, तो ये कैसे आप दोनों का जो एक मेल ताल या जो भी इसको वर्ड यूज़ करना चाहें, वो कैसा था एक्सपीरियंस? पहले तो हम काफ़ी अरसे बाद दोबारा टीम में साथ मिले थे हम लोग, तो काफ़ी हमारा, क्योंकि मेरा भी डेब्यू हुआ था, तो हम लोग काफ़ी अरसे से एक साथ ही क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी साथ करते हैं, पिछले 3-4 सालों से हम लोग साथ थे। और उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसने जब पहली इनिंग में परफॉर्म किया तो हम आपस में बात कर रहे थे, हर ओवर के बाद या हर 2 ओवर के बाद या हर सेशन के बाद हम आपस में बात कर रहे थे, और बात हमारी सिंपल यही थी कि साजिद यहाँ पे बस एक अपने आप पे बिलीव रखना है और अपनी स्किल पे बिलीव रखना है, और कोशिश ये करनी है कि अपनी लाइनों लेंथ पे जितना हो सके, जितनी अच्छे एरिया में हम बॉल करेंगे और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए उसमें। अच्छा, बड़ी मज़े की हमने विकेट्स देखी आपकी तरफ से, किस तरह से आपने जो है लिटरली अपनी पेस वेरी की है और ओवरऑल स्किल्स दिखाई हैं। सारी विकेट्स में से सबसे अच्छी विकेट आपको कौन सी लगी, जो आपने 11 विकेट्स ली हैं? एनी वन इन पर्टिकुलर जो आपने खुद बहुत एंजॉय की हो? देखें, विकेट तो मेरे लिए सारे इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अगर आप कहें तो रूट की जो विकेट थी वो मुझे ज़्यादा, वो क्योंकि काफ़ी मुश्किल बैट्समैन है और काफ़ी बड़ा नाम है उनका। आपने रूट कनाल कर दिया उनका। हाँ जी, रूट, क्योंकि वो मुझे पक्का कर रहे थे और मेरी कोशिश थी कि मैं भी उन्हें पक्का करूं, और पक्का होने वाले नहीं हैं। हाँ, वो मुझे काफ़ी टाइम से, क्योंकि उन्होंने लास्ट इनिंग में भी मुझे ऑफ स्टंप के जो भी बाहर मिलता था उस पर स्वीप या रिवर्स स्वीप पे जाते थे, लेकिन मेरी इस इनिंग में कोशिश ये थी कि मैं उसे स्टंप टू स्टंप रखूँ, और पुरानी उसकी वीडियोज़ देखी हुई थी, तो बस उस पर रहा और अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली। चलो ठीक है, इट्स वेरी गुड टू नो कि एक क्लियर प्लान था अगेंस्ट द अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लैंड। यही पता चल रहा है यहाँ से कि जहाँ पता था कि वो स्वीप करेंगे, रिवर्स स्वीप यूज करेंगे, पाकिस्तान वाज आल्सो क्लियर ऑफ देयर प्लान्स। थैंक यू सो मच नुमान, बैटिंग भी बहुत अच्छी की आपने, मुबारक हो जी। थैंक यू। फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी उनकी एक हम देख रहे हैं। यहाँ 30 करना जो है वो 70 के करीब है, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। जबरदस्त फॉर योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस टेस्ट मैच, एंड उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान आगे भी जो है, जो अगला टेस्ट मैच है वो जीते। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड रमीज यू आर गोना स्टे विद अस बिकॉज़ नहीं अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच। आपको हम रोकने लगे बिकॉज़ वी नीड फर्दर एनालिसिस फ्रॉम यू। आई एम श्योर all the fans out there are extremely happy today with this Pakistan win. The series is now 1-1, so makes for an interesting third test. We're going to take a short breather on pitch side. When we come back, we'll be discussing much more, so don't go anywhere. Fabulous win by Pakistan. Then they are now leveling the series with England. England were bowled out for just 144. All 20 wickets went to the spinners of Pakistan. Pakistan winning this match by 152 runs. Well, we heard from Noman early before pitch side. Now we've been joined by David Gower to give us a bit of the England perspective on where they went wrong. Just reflections, initial thoughts, initial reflections. Could England have done anything differently? Well, before I get to them, just to make the point that Pakistan have done what they had to do. That 100 in the first innings from Cameron, vitally important. Every run they made subsequently, vitally important. The bowling was outstanding. Yes, of course, the pitch was going to go down and down, deteriorate through the course of the game, and that was expected by everyone. That was part of the game plan. But what happens was, I think that England will look back at, say, 1 or 2 moments, 3 or 4 moments actually, where they could have been closer. So they wanted to get close in the first innings. They lost the last 4 wickets very quickly. That was bad. They dropped the catches that gave Salman Ali Agha a chance to go from single figures to 60. 50 runs difference, well, they lose by 100, not 150. So these are things that keep you in the game. And of course, there's a different feel. If you're chasing, say, 200, not the best part of 300, that feels very different as a batting side, and you might approach things differently. So yes, there are always things they'll regret. Individuals will think about the individual shots they played. But I think the credit still has to be very much Pakistan for actually coming up with a plan. And then executing it. All changed between the first 2 test matches. Thinking of a plan
and executing the plan. I mean, those words all get used sometimes very loosely in the context of this game, but for once it's really worked. Yeah, execution was always going to be key. It's one thing to make a plan, but then it's another for your team to actually come out forward and execute it. And Sajid Khan did that really well in that first innings, because that was key. I mean, apart from that innings by Ben Duckett, he was really the one who was making early inroads for Pakistan. You see, talk a great deal about the skill factor and how Pakistan did in this test match. But what about the mental aspect? Because you've been asked to come in, join the squad maybe 2 days before the test match, and you had to get used to the dugout environment, and then help Pakistan win a test match, which is quite incredible. I mean, this has got to be a freak performance, seriously, because 3 spinners were playing after a gap of 1 year. They weren't considered at all in so many Pakistan battles at home, and suddenly they're asked to come in a chaotic situation to come and develop some calmness and theme and win the contest for Pakistan. It's just an incredible turn of events for Pakistan, really, for the better. Absolutely. Sajid Khan, then also the player of the match today. He was quite phenomenal with the ball and really troubled the England batsmen. Just a quick look at how the spinners fared in this test match and the kind of lengths that they bowled, David. I mean, that's also been key. Bowling here on this particular wicket. Well, yeah, any good spin bowler will tell you there are 2 things. Obviously, control of line and length is vital, but also pace. The other thing, that graphic won't show you the paces necessarily, but the change of pace is one of the spinner's greatest assets, and the ability to gauge at what pace you bowl for a pitch on any given day, that's also important. So I thought, for instance, that the 2 Pakistani spinners basically got that right in the first innings. They put England under a lot of pressure, found the right pace of the ball to get it turning, sometimes from full. I mean, there were areas where it was fuller, obviously, sometimes from length. And when you get the ball to turn and sometimes bounce, but if you're getting it to turn, then that's the important thing. Also, the other thing, quickly, to keep it simple also, on a surface like this, you don't want to complicate stuff by trying different things. I think Noman Ali was a great example of keeping things simple and working his way to 8-wicket haul in the second innings. Let's not forget the performance of Kamran Ghulam, because remember, he came in as a possible replacement for Babar Azam, had expectations on his shoulders, scored lots of runs in domestic, but then he looked so comfortable out there, Ramiz. Yeah, I mean, his batting against spin was flawless, really, and seamlessly coming into the dugout environment. That was the other aspect, not easy to come and prove that, whatever you've achieved at the first-class level is good enough at this level also. But I thought his temperament, his technique against spin particularly, and how he played the important moments. He absorbed the stresses of the game quite gallantly, quite intelligently. And so a great moment for the family. And Pakistan may have found a good one, especially on such surfaces in these conditions. You can never forget Babar Azam, what a class act he is. And I think it's a little unfair to say that, he was put in and Babar Azam had to sit out. I think Babar Azam was struggling for form, and so he had to maybe go in any case. But yes, he had come in with great expectations, and I think now Babar and he can play together in that middle order. Absolutely, Kamran Ghulam quite special with the bat there. Then in terms of the next test match, it's all set up nicely for the third test. The series is levelled. What can England do? Because Pakistan has, found a formula, or they would like to think that they found a formula where the spinners are going to be hoping that it's a turning track, and then they can take wickets and basically win. Less golf and more cricket. Well, no, England will never change that. They love their golf. OK, let's look at this equally. First test match, England win by a clear margin on a very flat pitch. Now, I don't know what they're doing in Rawalpindi at this precise moment. You need to be there. You be the mole for England. No, but I'm just wondering, they can insert moles underneath. If they have the spiked roller, for instance, so if they... Sorry, I'm being slightly facetious, I grant you, but if it's a very, very flat pitch again, as the first pitch here in Multan was, if it's, for instance, like the pitch in Pindi 2 years ago, well, England don't mind that because they have the batting that can put pressure on because they score so quickly. Pakistan would be probably foolish to allow that sort of pitch to be prepared.
So in a sense, we're almost, I mean, we're kind of expecting that this pitch is going to turn when we get there in a week's time or so. And if that's the case, it makes it interesting. It depends how much, because, I mean, the balance here tilted day by day, didn't it? And the balance went more and more towards the bowlers day by day here. If it's a pitch that keeps the balance even for 2 or 3 days, that makes it another slightly different contest. Anything less than spin, advantage England. Because the moment you give them a flat track or a track where the ball spins on 3rd, 4th day, England will boss the test match. So Pakistan need to prepare a square turner from 10 o'clock on day 1. The day 10 pitch needs to be prepared for day 1, in short. Thank you so much for your thoughts, you. gentlemen. It's always a pleasure to have you on Pitchside. And it's all set up nicely for Rawalpindi. Let's have a look at when we are meeting you next. It's going to be on the 24th of October. The coverage starts at 9:25 a.m. local time in Rawalpindi. Well, a lot has been said about this pitch in these conditions. They've worked rather well for Pakistan in this test match. The selectors did the great job by selecting the right team, and the team did a great job by executing their plans. Kudos to these guys, because they've worked really hard to prepare the right kind of wicket for Pakistan. The pitch curator was always in the news, but I think he's going to be quite relieved with the result that Pakistan has got. That's pretty much all that we have for you from here. Until Rawalpindi, it's goodbye.